ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपकर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 112 of the Ayodhya Kandam, which has 31 verses. Collected in the heavens to hear the dialogue of Bharata and Sri Rama, heavenly beings applaud the two brothers. Having decided upon his course of action, Sri Rama turns his face towards his hut, while pleading his inability to protect the kingdom. Now that his attempts to take Sri Rama back to Ayodhya have been frustrated, Bharata prays to Rama for mercy once more. But finding that his elder brother cannot be swayed an inch from his vow, he places a wooden sandal decked with gold in front of his brother and requests him to place his feet on them. Readily acceding to his request, Sri Rama hands over the sandals to Bharata, who takes a vow before him to enter the fire in case he does not return immediately on the expiry of his term of exile. Sri Rama confirms his vow, and after embracing Bharata and Shatrughna and bidding goodbye to all with due respect according to the rank of each, enters his cottage. आज हम द्वादश शदीद शक्तम का सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक है। ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका का देकर उन सबको विदा करना। तम अप्रतिम तेजोभ्याम भ्रातृभ्याम रोमहर्षणं विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का रोमांचकारी समागम देख वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। The eminent sages who had assembled there were astonished to behold at close quarters the thrilling meeting of the two brothers, Sri Rama and Bharata, who were endowed with matchless glory. अंतर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः तौ भ्रातरौ महाभागौ काकुस्थौ प्रशंसिरे। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली कुकस्थ वंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। Hosts of sages who stood invisible in the air and most eminent rishis bodily present there applauded in the following words those two highly blessed brothers, Sri Rama and Bharata, the scion of Kukusta. सधार्यौ राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ श्रुत्वा वयं हि संभाषम् उभयोः स्पृहयामहे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। Ever noble are the two princes, Sri Rama and Bharata, who not only know what is right, but also tread the path of virtues. Indeed, having heard the dialogue of the two, we long to hear it again and again. ततः तु ऋषिगणाः क्षिप्रं दशग्रीव वदैशिनः भरतं राजसार्दूलम् इति ऊचुः संगता वचः। तदंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही ये बात कही। Then the hosts of rishis, for their part, who longed for the death of Ravana, hastily addressed with one voice the following exhortation to Bharata, a tiger among princes. कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्तः महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यत् अवेक्षसे।
महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। O Prince of high birth, nay, endowed with exceptional intelligence, distinguished by noble conduct and enjoying great renown, the advice of Sri Rama ought to be accepted by you if you have the least regard for your father. सदा नृणमिमं रामं वयम् इच्छामहे पितुः अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। We wish to see Sri Rama absolved forever from all obligations to his father. For due to his getting square with Kaikeyi as a result of Sri Rama's having readily offered to be in exile, King Dasharatha has ascended to heaven. एतावत् उक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहर्षयः राजर्षयश्चैव तथा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजश्री सब अपने अपने स्थान को चले गए। Having uttered these few words, the Gandharvas, along with the eminent sages as well as the royal sages and all the others, went each his own way. क्लादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभदर्शनः रामः संहृष्टवदनः तान् ऋषीन् अभ्यपूजयत्। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने इन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। Gladdened by this observation, Sri Rama of blessed appearance looked brighter. Nay, his face thrilled with joy. He duly extolled the aforesaid rishis. त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया कृताञ्जलिः इदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वह लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले। The celebrated Bharat, for his part, whose limbs were seized with a tremor, made the following submission to Sri Rama, a scion of Raghu, with folded hands in faltering accents. राम धर्ममिमं प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसन्ततं कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम्। कुकस्था कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाले जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। Fully considering, O Rama, this sacred obligation of getting yourself consecrated for the rulership of Ayodhya and protecting the people, which is also linked with our family's usage, you ought to fulfill it, O scion of Kukusta, and grant my prayer as well as that of your mother Kausalya. रक्षितुं सुमहत् राज्यम् अहम् एकस्तु न उत्सहे पौरजान पदांश्चापि रक्तान् रंजयितुं तदा। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। I, for my part, cannot protect the vast dominion single-handed, nor can I please the citizens and the people of the countryside who are so devoted to you. ज्ञातयश्चापि योद्धाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही वाट जोहते हैं।
Indeed, our kinsmen, nay, warriors, friends, and relations too wait for you alone as cultivators do for the rumbling cloud. idam rajyam mahaprajnya stapaya pratipadyahi shaktiman sahi kakusta lokasya paripalane. महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोका का पालन करने में समर्थ हो सकता है। Accepting the kingdom, O highly intelligent brother, actually place it on a sound footing. Such as you are capable of protecting the people on all sides, Ocean of Kakusta. एवम् उक्त्वा अपतत् भ्रातुः पादयोः भरतः तदा वृषं सम्प्रार्थयामास राघवे अतिप्रियं वदन्। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। Saying so, Bharata then fell at the feet of his elder brother and made a fervent appeal to him to accept the sovereignty, speaking in most endearing tones to Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत् श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयं। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वरण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मत हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं ये बात कही। Placing on his lap the aforesaid brother Bharata, who was dark brown of complexion and had eyes resembling the petals of a lotus, Sri Rama, who was himself endowed with a voice resembling the crackling of a swan in wrath, replied to him as follows. आगता त्वां यं बुद्धिः स्वधा वैनयिकी च या वृष उत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीम् अपि। तात, तुम्हें जो ये स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। You can very well protect even the earth, to say nothing of Ayodhya, through this innate wisdom in the shape of underestimation of your worth born of humility that has dawned on you, my dear brother. अमात्यैश्च सुकृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मन्त्रिभिः सर्वकार्याणि समन्त्रय महान्त्यपि हि कारय। इसके सिवाय अमत्यों, सुहृदयों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों ना हो करा लिया करो। Nay, coolly deliberating with your ministers, friends, and wise counselors too, get through even your major concerns. लक्ष्मी चंद्रात् अपेयात् वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। Splendor would soon depart from the moon, nay, the Himalaya mountain would sooner shed its snow, and the ocean would sooner transgress its limits, that I shall violate the plighted word of my father. कामाद् वा तात लोभात् वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतं न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्। माता के कई ने कामना से अथवा लोभ वंश तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसको मन में ना लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। No matter whether all this was wrought by your mother in your interest from affection for you or from greed of sovereignty through your installation as Prince Regent, my darling brother, it should not be taken to heart by you, and you should behave towards her as towards a mother. एवं ब्रुवाणं भरतः
कौसल्या सुतम् अब्रवीत् तेजसा आदित्य संहासं प्रतिपत् चंद्र दर्शनम। जो सूर्य के समान तेजस्वी है तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीय के चंद्रमा की भांति आहृदयजनक है, उन कौशल्य नंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यूं बोले, To Sri Rama, the son of Kaushalya, who was speaking as aforesaid, nay, who vied with the sun in glory and who was pleasing to sight as the new moon appearing on the first day of a bright fortnight, Bharata replied as follows. अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। आर्य, ये दो स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेंगी। Pray, stand with your feet on the pair of wooden sandals embellished with gold placed before you, O noble brother. Surely these will supply the needs and ensure the safety of men. यो अधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च प्रायच्छत् सुमहातेजा भरताय महात्मने। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। Placing his feet on the sandals and immediately leaving them, Sri Rama, a tiger among men who was endowed with exceptional glory, gave them to the high-souled Bharata. त पादुके संप्रणम्य रामं वचनम् अब्रवीत् चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो हि अहम् फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन तव आगमनम् आकांक्षन् वसन् वै नगरात् बहिः। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा, पर तब इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। Reverently bowing down to the wooden sandals, he spoke as follows to Sri Rama. Indeed, having relegated the burden of rulership to the wooden sandals, O gallant brother, I should like to live on fruits and roots alone for 14 years. O delight of the Raghus, wearing matted locks on my head and bark of trees on my person, and actually dwelling outside the city, longing for your return to the capital, O scorcher of all enemies. तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परं तप चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षे अहनि रघुत्तम। रघुकुल शिरोमणे, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। If, however, when the 14th year of your exile has fully ended, O jewel among Raghus, I do not see you return to Ayodhya the following day, I for my part shall enter the fire once for all. न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनं तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही। Giving his approval in words with saying so be it, and embracing Bharata with love and embracing Shatrughna as well, Sri Rama spoke as follows. शत्रुघ्नं च परिष्वज्य वचनं च इदम् अब्रवीत् मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति। Sri Rama spoke as follows. Take care of Mother Kaikeyi, be not angry with her. मया च सीतया चैव शप्तो असि रघुनन्दन इत्युक्त्वा अश्रुपरिताक्षो भ्रातरं विससर्जः। You are hereby adjured to do so by me as well as by Sita,
O delight of the Raghus. Saying so, his eyes suffused with tears, Sri Rama bade goodbye to Bharata. रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। स पादुके ते भरतः स्वलंकृते महोज्ज्वले संपरिगृह्य धर्मवेत् प्रदक्षिणं चैव सकार राघवं चकार चैवोत्तमनाग मूर्धनि। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई इन परम उज्जवल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। Receiving with reverence the aforesaid pair of exceedingly bright ornate wooden sandals, the celebrated Bharata, who knew what is right, went clockwise around Sri Rama, a scion of Raghu, and further placed the pair of sandals on the head of an excellent elephant. अटानुपूर्व्यां प्रतिपूज्य तं जनं गुरुंश्च मन्त्रीन् प्रकृतिस्तथानुजौ व्यसर्जयद् राघव वंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवान् इव अचलः। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमश वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। Then, paying respects in the order of precedence to all those men who had gathered there, as well as to the preceptors, counselors, subjects, and two younger brothers, Bharata and Shatrughna, who were going to Ayodhya, Sri Rama, the promoter of Raghu's race, who stood by his duty unshaken like the Himalayan mountains, bade them goodbye. तं मातरो बाष्पगृहीत कंठ्यो दुःखेन न आमन्त्रयितुं हि शेकुः स चैव मातृरभिवाद्य सर्वा रुदन् कुटिं स्वां प्रविवेश रामः। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकी। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। His mothers, whose throat were choked with tears through agony, could not even speak to him. Greeting all his mothers, the celebrated Sri Rama too re-entered his hut weeping. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। Thus, since Canto 112 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।